हम बचपन में जब कहते थे ना, कोई पूछता था बड़े होके क्या करेंगे, तो हम कहते थे बड़े होके हम कौम की खिदमत करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे। खासतौर पर जो बच्चे डॉक्टर बनना होता था, बिल्कुल बिल्कुल उनका यही जुमला शुरू से शुरू हो जाता है ना। Exactly. कि हम ये करना चाह रहे हैं, हम अच्छे काम करना चाह रहे हैं, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन मैं छोटा सा एक लड़का हूँ और काम करूंगा बड़े बड़े ना। इंसान की जिबिल्लत में है, उसकी फितरत में है साथियों, कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए। उसको ये आइडेंटिटी चाहिए कि यस मैंने कुछ बड़ा किया। लेकिन असल में वो लोग जो वाकई छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा काम करते हैं, वो बनते हैं फिर इंस्पिरेशन। आज ऐसी एक शख्सियत राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स को ऑनर कर रही हैं कि जिन से मुलाकात का मैं बहुत अरसे से ख्वाहिशमंद था। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड कि डॉक्टर क्रिस श्मोत्जर ने वक्त निकाला है। और डॉक्टर क्रिस की कहानी अभी मैं और फातिमा आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। लेकिन ये एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं जिन्होंने पिछले 30 से 35 बरस में पाकिस्तान में लेप्रेसी और ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से इतना इनक्रेडिबल काम किया है। रावलपिंडी आई और फिर यहीं की होकर रह गई। इनकी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सलाम। थैंक यू so much for coming. You are most welcome. All right, Dr. Sahiba. So tell us, let's start from your initial story. When was the first day that you arrived in Pakistan, and why did you come to Pakistan? And did you come to with a mind that I will stay for the rest of my life? Pakistan will be my home. How did it all happen? Actually, it came through German volunteers who had been working here for many years, and I was in Germany doing my medical post-graduation, and when I was at the time of my final exams, somebody asked me, can you imagine to come to Pakistan to improve the leprosy program for women? And I was always thinking that I would like to go to another country for working. Not Germany. Not Germany, because I felt in Germany the medical services are anyway good. Yeah. And I would wanted to work somewhere where services needed more help. So I was thinking, and I thought, yes, this is right. Will be coming to Pakistan, and for me it was a bit of a challenge, because I first had to learn about leprosy, because in Germany you cannot learn anything about leprosy. So I first had to go to Ethiopia for leprosy training. All right. And what year did you come to Pakistan? In 1988. 1988. So did you come with the thought that you will live in Pakistan forever, or what? It just happened? I mean, I was already at that time thinking it would be a long-term commitment. Okay. Because I always think that just going somewhere for a short time is not really making an impact. And why Rawalpindi? Well, because these German volunteers who had talked to me, they were working at Rawalpindi Leprosy Hospital. All right. And that is how I came there, and my first thing was to learn a little bit of Urdu. Otherwise, I could not communicate with the patients. You are talking to us in English today, but Dr. Saba, I know through sources that your Urdu is very good also. No? वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं मरीजों के साथ बात कर सकती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। So उर्दू कैसे सीखी थी? कोई टीचर रखा था या बस how did you learn उर्दू? पहले मैंने उर्दू टीचर के साथ सीखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने मरीजों से और स्टाफ से सीखा है। Oh yes, बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिकेट कर करके तो वो आपका अच्छा हो गई उर्दू। तो डॉक्टर साहबा, do you go back to Germany, come and go, or Germany आना जाना रहता है last 30 years? Yes, I go to Germany normally once a year. Okay.
because I'm also a medical advisor for the German Leprosy and Tuberculosis Relief Association. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब जब आप जर्मनी जाती हैं when you are over there तो what do you miss about Pakistan? Do you miss anything about Pakistan when you are in Germany? I sometimes miss the food. I like the Pakistani food, and yeah, when I'm longer there, then I also miss my work. Your work. Your work. Your passion, huh? You're so passionate about your work. All right, Dr. Sabha, now tell us a bit about leprosy and the stigma it has with it. And then maybe later on we would also like to talk about tuberculosis also. But what is this disease? What is this ailment? And is this over from the world? It is over from Pakistan, or we still find cases? Well, leprosy is a very old disease. It is caused by a germ, and it is easily curable. Okay. The only problem with leprosy is that it has to be diagnosed early. It starts as a simple skin disease. वो एक जिल्द की बीमारी है. जिल्द की बीमारी जैसे कोई भी जिल्द की बीमारी होती है. या इनकी कोई खास तकलीफ नहीं है, सिर्फ छोटे निशान हैं. Okay. And that is very often overlooked. और ये स्किन पे किस बॉडी पे कहीं भी आ सकता है निशान? वो पूरी बॉडी पर हो सकता है. Okay. And the problem is if this is overlooked, then the disease can spread to the nerves. अच्छा. And due to the nerve damage, there can be disabilities. हाथ या पैर कमजोर हो सकता, सुन हो सकता, आंख में नुकसान हो सकता. And that is why the main issue for leprosy is not the treatment. The main issue for leprosy is early diagnosis. But Pakistan has made tremendous progress. अच्छा. When I came to Pakistan, we had more than 1,000 new cases every year. यानी 80 की दिहाई में 1980s में हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 1500 नया केसेस निकला है. तकरीबन 1500 नए केसेस होते थे every year. Yes. Okay. और अभी बहुत डाउन हो गया. Now we have around 300 new cases per year. All over Pakistan. All over Pakistan. Yes, and this is a big progress, and the main point is to find leprosy early, as I said. तो आप क्या रेकमेंड करेंगी हमारे व्यूअर्स को कि क्या कोई निशान नजर आए तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्या कोई उसमें खारिश होती है या दर्द होता है या जख्म होता है? वो निशान किस तरह का होता है? हाँ, ये मसला है, क्योंकि खारिश नहीं होती है, दर्द नहीं होती है, वो सिर्फ निशान है और लोग ये ओवरलुक करते. वो कहते हैं कुछ नहीं है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा. That is the point. When we train dermatologists, we always tell them, if you don't know what skin disease it is, think about leprosy. Oh, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तो इसका मतलब है leprosy हो सकता है. Yeah. Interesting. And that is the most important message. But Pakistan has a very good track record of leprosy because, as I told you, the number of cases has come down so much. There are no longer many people with disabilities, but it has to continue. We cannot now stop and say, ये बीमारी खत्म हो जाएगा. No, we still have to work. So, Dr. Sabha, what are the consequences if it is detected later in a stage? So, imputation, आज़ा काट दिए जाते हैं, or what happens, or is some organ which is non-functional for the rest of the life?
So what happens if it is detected later at a stage? Exactly. This is the real issue. For example, you may have deformed hands or feet. Acha. You may have wounds because you cannot feel if you injure yourself. Ah. And that means life becomes difficult. You may not be able to do certain jobs. You may not be able, for example, in agriculture, it is dangerous to work in the fields. So one has to be early, very much on early case finding. And that is what we are doing. We call it family contact surveys, skin camps. We are going to areas where there were a number of patients before, and we offer the population free screening. Anybody can come with any skin problem and can be checked, and by that you are improving the situation. And so I think we are on the right track. वो जो कहते हैं छूत की बीमारी है या कम्युनिकेबल डिजीज है, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को बिल्कुल बिल्कुल बॉडी टच से लग सकती है, हाथ मिलाने से लग सकती है. व्हाट इज द डिटेल्स? हाउ डू यू हाउ इज इट कम्युनिकेबल? इट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. अच्छा. जब एक शख्स बातें करते, खांसी करते, स्नीजिंग करते, ये चेरासीम हवा में छाते हैं और वो दूसरा शख्स ये चेरासीम इनहेल करते हैं. Okay. And we are now in a very good position that we can offer the people around a patient who is under treatment. We give these people what we call a prophylaxis in the medical language. We give these people, for example, the husband, the wife, the children, an antibiotic so that they have a reduced risk to develop the disease. उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं अगेंस्ट से. डॉक्टर क्रिस हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में. मैं और फातिमा छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा का और उनकी टीम का जो टीबी के हवाले से काम है, ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे. और फिर डॉक्टर साहिबा से कुछ रावलपिंडी की भी बात करेंगे कि अब ये इनका होम टाउन क्या है, क्या रावलपिंडी इनका होम टाउन है, और अगर ये आके लाहौर चली जाती हैं या पेशावर चली जाती हैं तो फिर क्या होता है. तो रावलपिंडी से जो इनका रिश्ता है वो भी डॉक्टर साहिबा से इस ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा पूछेंगे. रहिए हमारे साथ. डॉक्टर क्रिस श्मोत्सग्र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक हेल्थ वॉलंटियर हैं. जर्मनी से इनका ताल्लुक है. पिछले तकरीबन 3 दिहाइयों से रावलपिंडी में रह रही हैं. पाकिस्तान आई और फिर पाकिस्तान ही की हो गई. डॉक्टर साहिबा, व्हाट इज वन यूनिक थिंग अबाउट दिस कंट्री दैट व्हेन यू केम you said Rawalpindi is the place. Tell me one thing about Rawalpindi or Pakistan that held you here. Well, I think for me the main thing is that the work, the services are needed, and people are very hospitable to foreigners. And khane, the food. खाना बहुत अच्छा है. मुझे बहुत पसंद है. यहाँ का फूड तो स्पाइसी है, तो आपको स्पाइसी खाना पसंद है? मुझे बहुत पसंद है. अगर मैं पूछूं कि एक फेवरेट डिश जो आपकी है तो वो कौन सी होगी? कौन सा डिश? कौन सी डिश बहुत अच्छी लगती है? मुझे बहुत पसंद है मटर कीमा. मटर कीमा. तो do you cook yourself as well? पाकिस्तानी डिशेस बना लेती हैं? We have a lady in our household. अच्छा, वो बनाती हैं. Who cooks and actually she sometimes prefers to make German खाना. अच्छा. ठीक है. उसको जर्मन खाना प्रेफर करती है, आप पाकिस्तानी खाना प्रेफर करती हैं. अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है कि हमारे पास कुछ तस्वीर हैं डॉक्टर क्रिस की.
वो दिखाते हैं और साथ साथ डॉक्टर क्रिस उनके बारे में कुछ हमें कहानी भी सुनाएंगी। जी राशिद। ऑलराइट जी, ये किसकी तस्वीर है डॉक्टर साहिबा? Well, this is an old picture, and I am learning to ski. ये कहाँ की तस्वीर है? Where is This it? is from my home area where I'm grown Germany up, में? where I have grown up. All right, Bavaria, Germany की तस्वीर है। Okay, बचपन की। Yeah. All right. ये कौन है? This is also me, because my parents were quite strict with us children, that we had to help in our farming and in our household works. So that was during the holidays, and we had to prepare wood. Wow, तो ये wood की fence बना रही हैं डॉक्टर Yeah. साहिबा खुद। All right. And this looks to be, this is where? This again is Germany? No, this is now the first picture in Pakistan. All right. That was when I arrived in Pakistan in 1988. Okay, और ये बीच में येलो ड्रेस में डॉक्टर क्रिस जो है वो खड़ी हुई हैं। Okay, great. And these are the patients that you are treating? Well, this is one patient, and there are doctors Oh, who those are are learning doctors. Yeah. about how to examine a patient with leprosy. All right. Okay, Rashid, can we go ahead? This again is a TB patient or a Yeah, leprosy? and this is now a little girl who has TB, and yeah, she was quite sick, and it was so good to see how she recovered and got well again. God well again, mashallah, good. This is Balakot? This is Balakot. This was one of the toughest days in my life, because we were the first medical team after the earthquake 2005 who reached Balakot, and there were so many people with injuries. Yeah. No one can forget those times. And this is the reconstruction? Yes, the reconstruction work after the earthquake. Well, and that is my passion. This is at the Nanga Parbat base camp, and I'm a fan of hiking. Hiking. No wonder you are from Bavaria and coming from Germany, and those mountains. I'm not astonished that you are a big fan of Pakistani mountains. You have been awarded the highest civil award of Germany, the Cross of Merit, and the former German ambassador conferred the award on you. Tell us a little about that. So I'm very happy to know that the German government is acknowledging your work in Pakistan. Well, for me, it was a big surprise. I didn't hear anything about that before, and I very strongly felt that this is not my award. It is the award of the whole team, because I think this is very important. You can only do good work if your whole team is doing a good work. Yeah. Correct. True. Very right, very right. All right, so tell us about your future plans. What is one thing that Dr. Chris has not done as yet in life and you want to do? Well, actually, what I would like to do is that I would see that tuberculosis is becoming less in Pakistan. Because this is such a big issue, and we are working for that since the year 2000 now, and there is still a lot more to do. True. And your footprint is all over Pakistan? You're catering to patients from all over the country? No, because you see the number of tuberculosis patients is so high in the country. More than 600,000 new cases per year. 6 लाख 6 लाख से ऊपर 6 लाख से ऊपर नए पेशेंट्स टीबी के आते हैं Yeah. पाकिस्तान के Yeah. सामने.
So we have to concentrate on Rawalpindi. All right. Rawalpindi favorite है ना? Rawalpindi is your hometown now. Yes, in Rawalpindi I feel at home. Also when I travel to other parts of the country, when we are at the motorway exit or so, then I feel at home. जो ही पिंडी में एंटर होते हैं ओ घर आ गए है ना great Dr. Chris, thank you very much for your time. We are so proud of you, and on behalf of Pakistan Television, the Rising Pakistan, and on behalf of the whole country, thank you for channelizing your energies, your passion towards this country, towards the people of this country, towards Rawalpindi, towards the people of Rawalpindi, and owning this society as your own, and calling it your hometown. Thank you very much for having me. All right, Fatima, time to say shukriya to our viewers as well. और छुट्टी का टाइम है. बिल्कुल. और आज का शो जो है ना ओवरऑल अगर देखें तो वो बहुत अच्छा गया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा क्योंकि जब भी हम कोई अच्छी बात करते हैं और अच्छे लोगों को पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं तो वो एक अंदर से जो जज्बा है ना वो जाग जाता है ना. Exactly. आपने हमें बताना है आपको हलीम की कहानी कैसी लगी. आपने हमें बताना है कि MBA का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का एक जो ओवरव्यू हमने फीचर किया आज राइजिंग पाकिस्तान में वो आपको कैसा लगा. और इसके अलावा आप ये बताइएगा कि डॉक्टर क्रिस की बातें आपको कैसी लगी. डॉक्टर क्रिस की जर्नी, उनका पैशन, उनकी कहानी आपको कैसी लगी. हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, हमें याद रखिएगा. मिलेंगे फिर, अगर जिंदगी रही तो खुश रहिए. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.